हमेशा बोलता हूँ जवाब देना बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो है ना जिसको बोलते हैं, यू मस्ट कम्युनिकेट। अगर हमको ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है तो कम्युनिकेशन तो अच्छा होना चाहिए ना। So I welcome all of you on behalf of CSR Research Foundation. I'm ex-ONGC director. I was director of ONGC, and after my retirement, I am with this organization as a social service I'm doing. And I'm a president of this organization. We have our chief guest today, Justice Chandrasekhar. He's already here with us. We have Shri Subhash Agrawal ji. He's also here. He's the chairman of and founder of SMC Group. And we have Shri Sharma ji. He's secretary of Yuva Bharati Trust. Basically, he was with our former Prime Minister Chandrasekhar ji. He was associated with him, and I think it is his trust which he is managing. Right, Sharma ji? uh, Socially very active, and about this Green Tech Foundation. No, sorry, this not Green Tech, CSR Research Foundation. CSR Research Foundation basically is a non-profit organization, and basically it is working for the awareness programs on different issues. We started with the sanitary napkin program way back in 2015, and at that time I was director of the company. I joined as director at that time, and we carry on our journey from there. We have almost installed this sanitary napkin machines in almost 100 schools in around Delhi NCR, and almost similar numbers in Rajasthan also, some of the area from Alwar and all these remote places. And we did programs on different topics, financial inclusion, because government of India has come up with many schemes, whether the awareness about those schemes are not there amongst the people. So इस संस्था का यही उद्देश्य है कि हम उस जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है उनको हम कैसे लोगों तक पहुंचा पाएं। तो वो एक सबसे बड़ा कार्य हम यहाँ पे इस संस्था के थ्रू करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें अवेयर किया जाए। एंड इंडस्ट्री से, PSU से लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको ये सब चीज़ें आप बताएंगे तो एटलीस्ट देश की ग्रोथ होगी। अगर लोगों को पता ही होगा स्कीम्स के बारे में, तभी उसका वो फ़ायदा ले पाएंगे, अदरवाइज फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। बहुत सारी स्कीमें हैं जो नीचे तक लोगों को पहुंचती नहीं है। तो दैट इज़ द बेस। जैसे ग्रीन एनर्जी है या क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी बातें चल रही हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि होता क्या चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को की जानकारी हम लोगों को तक पहुंच सके, इसलिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम एक तरह से कह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी क्या, ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी, व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी, आई थिंक लॉट ऑफ स्पीकर्स विल कम एंड दे विल स्पीक अबाउट ग्रीन एनर्जी, बट टू स्टार्ट विद, आई थिंक व्हेन आई वाज in one of the conferences in Abu Dhabi, people are talking about green energy. So I was also curious, what is this green energy? People are talking about green steel. People are talking about green cement. So I was curious कि है क्या चीज़ ये green, everything में green क्यों लग रहा है? Then I came to know that there are three things, which is green energy, clean energy, and renewable energy. So these are the three forms of energy which I think we are going, which will be the future of the world, I can say, not on our country, but it will be the future of the world. I think you might be knowing that our Prime Minister has already said by 2070 we will be the carbon neutral country, and we are working towards that. World is working towards that. Everybody wants to become a carbon neutral. But the challenges are there. We will discuss in these 2 days what are the different challenges and what is the way forward. These are the things we will be listening from the eminent speakers who will come here in these 2 days program. The only thing is, if you have any queries, any questions within you, please come out openly. And it's basically a program where a discussion should take place more than the listening.
So that is the thing I can say in toto, that yes, we should interact more. The first will be our inaugural session. So we were waiting. Swaji aa gaya. Acha. Oh, welcome, Swaji. uh, okay. So we have our chief guest here. I would like Dindayal ji to escort the Sri Justice Sri Chandrasekhar ji to the dais. I'll also request Sri Subhash Chandra Agrawal ji, SMC Group's chairman. श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल जी के बारे में आपको पता नहीं, मैं बताऊंगा। गोपाल जी आपने बहुत टीवी में देखा होगा उनको डिबेट करते हुए। ही इज बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। सो गोपाल जी हैं, एंड दीनदयाल जी ऑलरेडी है वहाँ पे। शर्मा जी, सेक्रेटरी युवा भारती ट्रस्ट। मिस्टर सरन इज ऑन द वे, स्टक इन द ट्रैफिक बिकॉज आज शपथ ग्रहण समारोह की वजह से काफ़ी जगह रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। तो मिस्टर सरन इज CEO ऑफ द ग्रीन टेक फाउंडेशन। आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा, ग्रीन टेक फाउंडेशन गिव्स लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। सो ही इज ऑन द वे, विल कमिंग। एंड to start with, I think I'll just give a brief introduction of all our eminent speakers for today's program. The chief guest, Sri Chandrasekhar ji, he was Justice of Delhi High Court. He is chairperson of many other bodies. He is the chairperson of Real Estate Appellate Tribunal, Delhi and Chandigarh. He is a chairperson of approving panel for GAR, Income Tax, Ministry of Finance, Government of India. So that kind of portfolio, he is equivalent to, I can say, MP, Member of Parliament के बराबर है इनका portfolio जो है. He is a member governing council NLU New Delhi. So welcome, sir, for this, and we'll be listening from him. And we have Sri Subhash Chandra Agrawal ji. He is a chairman of SMC Group. SMC Group is a very big group. अगर आपको शेयर में कुछ काम करना तो SMC Group को पकड़ लेने का, वो आपको जरूर फायदा करा देंगे. They are present in 500 places, I think. आपके 500 ब्रांचेस हैं ऑलमोस्ट. हाँ, 500 सिटी में इनकी 2500 ब्रांचेस हैं, 500 सिटीज़. सो और सुभाष अग्रवाल जी काफ़ी सोशल हैं. एक आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में आप इनका प्रेजेंस पाएंगे. एकल विद्यालय के ट्रस्टी हैं और एकल विद्यालय के जो PSU का जो विंग है उसके चेयरमैन भी हैं. तो एकल विद्यालय के बारे में आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है विच रन्स, जैसे धर्मार्थ स्कूल होते हैं ना, उस तरह से स्कूलों को रन करते हैं. ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट सर्विंग दैट वे. We have Gopal Krishna Agrawal ji. I think he is a chartered accountant, very renowned person. And बहुत सारी टीवी डिबेट्स में गोपाल जी को आप देखेंगे, वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा बोलते हैं. उनकी मास्टरी है. अभी BPCL में डायरेक्टर बने हैं, डिपेंडेंट डायरेक्टर दे आर. एंड किसी भी सब्जेक्ट में आप गोपाल जी के बोलिए तो गोपाल जी पूरी तैयारी के साथ, हर डाटा के साथ आते हैं. तो इज़ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी. एंड काफ़ी एडवाइजरी बोर्ड में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी एडवाइजेस देते रहते हैं. तो हमको भी कुछ बोलना है तो गोपाल जी को बोल देते हैं, वहाँ बात पहुँच जाती है. तो इस तरह का चैनल हमने गोपाल जी के साथ बना रखा है. एंड शर्मा जी वेरी सोशल पर्सन, काफ़ी एक्टिविटीज़ में हैं. तो ये जो ट्रस्ट चलाते हैं युवा भारती ट्रस्ट, उससे काफ़ी एक्टिविटीज़ ये करते रहते हैं. काफ़ी जो गरीब बच्चों को है, स्कूल्स की एक्टिविटीज़ हैं, तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहते हैं. और कोशिश करते हैं कि जो डाउन टोडन लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प इस ट्रस्ट के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं, उस पर पूरा इनका फोकस होता है. और इस हमारे CSR रिसर्च फाउंडेशन के वो ट्रस्ट एक ऐसे भामाशाह है, एक तरह से हर चीज़, कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो हम शर्मा जी को पकड़ लेते हैं, शर्मा जी ऐसा करा दीजिए. दीनदयाल अग्रवाल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली. पहले ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत करते थे, चार्टर्ड अकाउंटिंग में इनका बहुत मास्टरी थी.
बैंकों का ऑडिट, ये सब करते हैं। अब उसके बाद उन्होंने सब काम को छोड़ के सोशल काम पे आ गए हैं, एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड ए CSR रिसर्च फाउंडेशन एंड बेसिकली डूइंग द सोशल वर्क, एंड ही वांट दैट कम्युनिटी शुड बी बेनिफिटेड। जो मुझे अर्न करना था मैंने अब अर्न कर लिया, बट आई वांट टू सर्व द सोसाइटी। विद दैट ऑब्जेक्टिव ही इज वर्किंग, एंड ही इज विद अस। So to start with, I think अच्छा, तो अभी we'll start with the lighting of lamp with the dignitaries. I would request all the dignitaries on dais to come, please. हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं फोन को साइलेंट में कर दूँ, नहीं तो फोन बजेगा तो। So, first of all, I would like to call Sri Deenayal Agarwal ji for a welcome address, formal welcome. धन्यवाद महावर जी। मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि महावर जी ने इतना मंच संचालन अच्छा किया है, एक बार उनके लिए ताली बजाएं प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि भाई साहब ने, महावर जी ने बताया था कि हमारी CSR रिसर्च फाउंडेशन की क्या क्या एक्टिविटी है, समय का अभाव है। हम आपसे 2 दिन तक साथ रहेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। हमारे चीफ गेस्ट को भी बाहर अभी जल्दी निकलना, उन्होंने मुझे कहा 11 सवा 11 छोड़ दिया मुझे, और हमारे जो आज की अध्यक्षता करे सुभाष जी को भी जल्दी जाना है। तो मैं सभी से माफी चाहूँगा कि अपने बारे में परिचय हम बाद में दे देंगे। तो मैं आज के मुख्य अतिथि के रूप में जो आज हमारे बीच चंद्रशेखर जी हैं, जस्टिस हैं, आप हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं और भी चेयरमैन है अपने अथॉरिटी के, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, निमंत्रण को आदर दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू। सुभाष जी भाई साहब के पास मैं अभी संडे गया था, तो मैंने भाई साहब मुझे आपकी आवश्यकता है सुबह, और मैं चाहूँगा कि आप भी रहें तो अच्छा लगेगा। उन्होंने भी बहुत शॉर्ट नोटिस हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। गोपाल जी भी, जैसा कि अभी महावर जी ने बताया कि गोपाल भाई जी हमारे लगभग अगर हमने 20 प्रोग्राम करे होंगे तो उसमें 18-19 प्रोग्राम में आए होंगे आप, क्योंकि क्या गोपाल जी की खासियत है, मैं कहूँगा ये टॉपिक है, बोले कोई बात नहीं है, मुझे बता देना, मैं इस टॉपिक के हिसाब से तैयारी करके आपको अच्छा इनपुट दूंगा। और वो इनपुट सरकारी मतलब पॉलिसी मेकर, एज ए कहते हैं एक पॉलिसी मेकर भी होता है, एक कॉर्पोरेट साइड से भी होता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आप हमें हमेशा सहयोग करते रहते हैं। मैं गोपाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और शर्मा जी, जैसा कि अभी बताया कि
आप पॉलिटिकल एडवाइजर थे, माननीय चंद्रशेखर जी के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके एडवाइजर रहे हैं, और मुझे जब भी जब जरूरत पड़ती है वो मुझे बड़ा सहयोग करते हैं, और सहयोग करने के साथ साथ बड़ा कहते हैं मोटिवेट भी करते रहते हैं। कभी बोले यार तू चिंता मत किया कर, तो मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि आप सभी लोग आए। किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसकी ऑडियंस से भी होती है। आप अच्छी ऑडियंस, जिस तरह की आप पार्टिसिपेशन है ओएनजीसी, ऑल इंडिया, आपके एनएचपीसी, एनएफएल, एसपीआईएमएल, गेल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग है, सबसे आप लोग आए। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बिना आपके ये कार्यक्रम की सफलता नहीं होगी। जो भी हमारी कमियां हों आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग भी एक इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, तो हमारी गलतियों को माफ करके हमें जरूर बताएं, सो दैट भी आगे कोई भी ऐसी प्रोग्राम करें तो हमारी गलती नहीं रहे। साथ ही में जो स्पॉन्सर है हमारे, रेडा है, नीति आयोग, जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमें स्पॉन्सर किया है, मतलब और नीति आयोग है, स्किल इंडिया है भारत सरकार का, और आपका बीएचईएल, एसएमसी ग्रुप की आप चेयरमैन साहब बैठे हैं, उन्होंने सबने हमें सहयोग दिया है, उसके लिए मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू दीनदयाल जी, आपने सबको आभार व्यक्त कर दिया। नेचुरली सबके आने से ही प्रोग्राम होता है, तो आई एम सीइंग दैट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ यू आर प्रेजेंट, जितने लोगों ने का नॉमिनेशंस आया थे, जो भी आए थे। We can assure you that you will get the, definitely when you go from here you'll get some enrichment and something within you, with you. So we have eminent speakers will be coming in these 2 days time, and we have sourced that almost who are the expert in the industry. So मुझे लगता है कि आपको जरूर उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमने पिछले जो भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे उन्होंने हमें हमेशा ही कहा कि सब we have learned something from here and then we are going. So I was talking about green energy, clean energy, and renewable energy. So you might be knowing worldwide this is growing at the rate of about 7 to 8%. Worldwide, as I'm talking about. And people are talking by 2050 we will be using only clean, green, and renewable energy. Nothing else. But I don't know whether that will happen or not. But still, the efforts are on. Now people have started talking about everything green. That like green steel, you have to you use green hydrogen to produce green steel. So like that. So energy which you are using should be in the form of either green, clean, or renewable. If you are using that, then the product which you are making from that is a green product. So that is a basic concept of the green steel and green products. So now people are turning towards that. So now we all have to gear up for that. Who are in touch with you, if you are advising to any industry or something like that, please tell them that shift towards this. If you are not shifting towards that, then you will be, तो फिर आप रेस में पीछे रह जाएंगे। तो हमको रेस में पीछे नहीं रहना, हमारे देश को रेस में पीछे नहीं रहना, हमको रेस में आगे रहना है। जैसा कि आपने देखा होगा ग्रीन हाइड्रोजन में का हब, बस तो उसी तरह से हम, हाँ, रेस में हमको आगे रहना है। ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनना है तो बनना है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसको, और हम सब करके दिखा सकते हैं ये। तो मैं और बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी जानकारी आपको देते रहूँगा। सो वी हैव श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, ही इज़ ए सीएमडी ऑफ एसएमसी ग्रुप्स, एंड आई थिंक दीनदयाल जी उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा एंड सोशली काफ़ी एक्टिव, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी टू गिव एड्रेस और एड्रेस द गैदरिंग हियर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर दीनदयाल अग्रवाल जी एंड मिस्टर वीपी महावर जी। दीनदयाल जी जैसे बताया है सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, और दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टू कीप यू अवेयर ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लम्स वी हैव इन द कंट्री। तो सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को चांस दिया। और देखिए मैंने इनको थोड़ा सा कहा था मुझे जल्दी जाना है, तो दीनदयाल जी को काफ़ी टेंशन थी, मेरे से ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे को जल्दी जाना है। तो जो आदमी इतना टेंशन ले सकता है, तो देश के लिए भी वो इतनी टेंशन रखते हैं और ऐसे प्रोग्राम कराते हैं, तो इनके लिए एक ताली ज़रूर होनी चाहिए।
और हमारे बीच में जैसे कि जस्टिस श्री चंद्रशेखर, चेयरमैन रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, और बहुत इनकम टैक्स और बहुत सारे मैं सुन रहा था, इनको भी जल्दी जाना है, तो मैं भी जल्दी अपने स्पीच को ख़त्म करूँगा, यानी क्योंकि ये बहुत बिजी हैं, इनका टाइम बहुत कीमती है इनको, और ये यहाँ पे आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं धन्यवाद भी कहूँगा अपनी तरफ से भी और CSR फाउंडेशन की तरफ से भी कि ऐसे कार्य में जुड़ना बहुत ज़रूरी भी है व्यवस्था के बावजूद। तो और इसी प्रकार मेरे फ्रेंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हैं, जो कि वो व्यस्त हैं, काफ़ी भाग-दौड़ करके आए हैं। उनको 10 बजे, सवा 10 का टाइम दिया था, लेकिन व्यवस्था के कारण, और वो बीजेपी इकोनॉमिक सेल के चेयरमैन हैं, स्पोक पर्सन हैं, और वैसे जैसे PCL में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ से गऊ वगैरह का भी ये पूरा ध्यान रखते हैं, गौशाला चलाते हैं, और अच्छे से जुड़े हुए हैं हर जगह। जहाँ इनको बुलाओ ज़रूर आते हैं, और अपनी व्यवस्था के बावजूद सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है 12th नेशनल समिट 2022 ग्रीन एनर्जी इन इंडिया एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल लीडरशिप। सो जैसे बताया गया VP महावर जी ने, ग्रीन एनर्जी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री है, और हमें कहाँ से मिलती है? विंड, सोलर, बायोमास, हाइड्रो, इन सब से ये रिन्यूएबल एनर्जी है, और ये अबंडेंट है, और 90% वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज में सन इज देयर, विंड इज देयर, सो अबंडेंट है, रिन्यूएबल है। और आज की तारीख में 20 लास्ट 20 ईयर्स में इसकी कॉस्ट काफ़ी घट गई है, और ये जो फोसाइल फ्यूल हम चलाते हैं, कोल, ऑयल, गैसेज, इनसे काफ़ी चीपर है। तो क्वेश्चन आता है कि चीपर भी है, हेल्दी भी है, इवन जॉब भी ज़्यादा देती है। यदि आज आप इसको रिप्लेस कर दो, लेट अस से टुडे, तो हमारी 50 लाख जॉब जाएगी और 1.5 करोड़ जॉब आ जाएगी। तो चीपर भी है, हेल्दियर भी है, और पोल्यूशन फ्री भी है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज इट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर 15 बिलियन US डॉलर इंडिया हैज इन्वेस्टेड, और वर्ल्ड वाइड 4.02 ट्रिलियन डॉलर is being invest, it should be invested to have the neutral free this by 2030। the target of वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है कि बाई 2030 50% एमिशन हम खत्म कर दें, बाई 2050 इट शुड बी जीरो, दो इंडिया हैज कमिटेड टू मेक इट जीरो बाई 2070। रिसोर्सेज हमारे पास, इंडिया के पास भी, वर्ल्ड के पास भी, हर एक की रिसोर्सेज की कमी है, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जॉब मैंने जैसे बताया 1.5 लाख, तो 1.5 करोड़ तो जॉब हमें इमीडिएट मिल जाएगी इसको एमिशन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन और जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल और दूसरे इक्विपमेंट्स जो इससे रिलेटेड है, इस एनर्जी से हैं, तो उसको बनाने में और उसमें और हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब ये इट इज़ ए नीडेड और ज़रूरी है, और हमें इस पे वर्क करना चाहिए, और ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट, इट इज़ नेसेसरी। तो हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसको एंटिसिपेट किया और उसका टारगेट बनाया कि 2022 तक हम 175 गीगावाट इसमें स्टार्ट कर देंगे, और बाई 2030 द टारगेट हैज़ बीन रेज्ड बाई 450 गीगावाट। So अब how much we have achieved? We have achieved around 50 to 60% in terms of 100 गीगावाट की हमारी इसकी सोलर एनर्जी की थी, 60 गीगावाट विंड एनर्जी का है, 10 गीगावाट बायोमास एनर्जी का है, और 5 गीगावाट हाइड्रो एनर्जी का है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टारगेट हैं, उसमें से 60% हम अब तक अचीव कर चुके हैं, जो कि बाकी 7 महीने, 5-6 महीने बचे हैं, तो उसमें 5-7% और अचीव कर लेंगे। तो वी आर लिटिल बिट बिहाइंड फ्रॉम आवर 175 गीगावाट टारगेट, बट स्टिल बिकॉज ऑफ कोरोना मिस सप्लाई कंसर्न्स वर देयर। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ
जिस तरह से मोदी जी लगे हुए हैं, उनका एक पैशन है कि इंडिया शुड बी पोल्यूशन फ्री। और आज हमें पोल्यूशन से, दिल्ली में हम सब देखते हैं कि लंग्स किसी का भी चेक करा लो, सबको प्रॉब्लम मिलेगी। तो और यंग बच्चों में प्रॉब्लम है, हम इतने हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इट इज़ वेरी मच नीडेड दैट इट शुड बी ग्रीन एनर्जी। बस मैं भी इतनी बात कहूँगा, और मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, मुझे जल्दी निकलना है, एक मीटिंग है। सो धन्यवाद सभी का बहुत मेरे को सुनने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने देखा होगा ग्रीन एनर्जी पे इन्होंने कितने डाटा आपको दे दिए कि वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो है। आई थिंक मेरा जॉब भी इन्होंने इजी कर दिया। आई थिंक थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने काफ़ी डाटा आपने दिए। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में अब आज की डेट में ओवर 1/3 एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल एंड ग्रीन, फ्रॉम दिस क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। So, and one more two interesting thing, then I will call the chief guest today. If you see worldwide, where India is first. If you see the Coimbatore Airport, no, it's Cochin Airport, Cochin International Airport is the first in the world solar power, and in the world's biggest solar power is in India. And you know where it is? It's about 2,200 megawatt plant. It is near Bhadla, this is a village we call. So these are the, so you can understand how the India is growing in the renewables, clean and green energy. So I think with this information, I would like to call Justice Sri Chandrasekhar ji to give his viewpoint and share his knowledge. He has also had a lot of informations. I think we will be enriched with the information he'll share with us. Mr. Sharma ji, Gopal ji, Agwal Sahab, Dindal ji, and Mr. Agawa and Mr. Mahawa. I'm really impressed by the impressed by the attendance that I'm told that so many of you are coming from the public enterprises to attend this program. I'm told that this event will focus on the nationally and globally important topics by way of expert presentations, panel discussions, and knowledge dissemination. Some of the areas that are being covered in the two-day programs are, I'm told that it is going to be on worldwide scenario of clean and green energy, role of oil, gas, and power sector in green energy, blockchain, technology for green energy, government initiative, etc., and there are going to be different other topics on where the speakers are going to address you. This, I'm told that this national summit is supported by Niti Aayog, Skill India, IREDA, BHEL, SMSC Group, and other industry public sector. I'm told that it is an endeavor of a CSR Research Foundation to bring industry leaders, scientists, academia, institutes, PSU, government bodies together on one platform to share the challenges, showcasing best practices, long-term strategies, and practical solutions for sustainable and scalable development in this sector. This summit will witness the presence who's who of the leading entities in green energy sector in India, as well as policymakers and top management personnel. I compliment the project director for this two-day summit, Shri Ved Prakash Mahava, President, CSR Research Foundation, and former director of ONGC and OMPL for conceptualize this event. I'm happy to be here amongst you to inaugurate and be the chief guest of this conference. My gratitude to Shri Grish Subhash Chandra Agarwal, CMD, SMC Group, to preside over this inaugural function, a session of this very important summit. Are you? Green energy is important for the environment as it replaces the harmful carbon emission from fossil fuels and coal as it is environmentally friendly alternatives. The primary object for deploying green renewable
Renewable energy is India's to advance economic development, improve energy security, improve access to energy, and mitigate climate change. This two-day summits, I hope, will provide opportunities to exchange experiences, new innovations, and thought processes to make India a global leader in green energy. The discussions and deliberation this summit will go and give a platform to PSUs, corporate, MSME sector, scientists, and academia to formulate strategy to achieve the ambitious target of 175 gigawatts of green oblique renewable energy in India by this year end. India is the fourth most attractive green energy market in the world, and this conference is a great opportunity for all the individuals and corporate working on green energy to save the environment, to know about the latest developments in technology and strategies to be adapted to achieve the targets in the most economical way. Sustainable development is possible by use of sustainable energy and by ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for citizens. Stock government support and the increasingly opportune economic situation have pushed India to be one of the top leaders in the world's most attractive green and renewable energy markets. The government has designed policies, programs, and lead liberal, liberal environment to attract foreign investments to ramp up the country in the green and renewable energy market at a rapid rate. It is anticipated that the renewable energy sector can create a large number of domestic jobs over the following years. This summit aims to present significance and significant achievements, prospects, projections, generation of electricity, as well as challenges and investment and employment opportunities due to the development of green and renewable energy in India. I'm hopeful that recommendations based on the outcome of this conference will provide useful information for policymakers, innovators, project developers, investors, industries, associate stakeholders, and departments, researchers, and scientists. I congratulate Shri H.N. Sharma ji, Patron Shri Deen Dayal Agarwal Chairman, uh, Chairman Shri Deen Dayal Agarwal, Chairman CSR Research Foundation, and other organizing sporting entities for the initiative and leadership. The summit is coinciding with the swearing-in ceremony of new President Srimati Draupadi Murmu, who has created history and come from a tribal community of this country. I'm happy to observe the presence of participants, speakers, academicians, scientists who have come from all across the country. They are from, I'm told, ONGC, Oil India Limited, GIL, NHPC, IREDA, BHEL, DGH, ISPRL, Center for High Technology. As many professionals and experts in the audience for this Tour Summit, my best wishes to all of you. Vande Mataram. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for giving a lot of inputs. I think काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई और अच्छा निकल रहे हैं सर. स्टार्ट VIPs के साथ ये रहता है कि दे ऑलरेडी एंगेज एट मैनी प्लेसेस. जैसे आज कुछ मिनिस्टर्स को आना था तो आज शपथ ग्रहण समारोह था, जैसा अभी चीफ गेस्ट ने मेंशन किया, तो दे कुड नॉट कम, दे मे कम इन द आफ्टरनून. तो इट इज़ लाइक दैट. तो इस तरह के प्रोग्राम्स में थोड़ा इस तरह का थोड़ा सा चेंजेस कभी कभी करना पड़ता है. हमने भी अपने इस प्रोग्राम में चेंजेस किए बेस्ड ऑन द इनपुट्स वी गॉट इट फ्रॉम द availability of the good speakers that we have done. So now we have Sri Gopal Agrawal ji. उनके बारे में काफ़ी अग्रवाल जी बोल. अच्छा अच्छा. So before we listen to गोपाल जी, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बोलते हैं. वो पूरी एकदम हो ना, एकदम पूरी एक गाइड लेके साथ में आते हैं कि हाँ
तो आपको पूरा वहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को हमको कैसे इम्प्लीमेंट करके और किस तरह से हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताएँगे। तो बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट दीनदयाल अग्रवाल जी टू फेलिसिटेट श्री Chandrasekhar ji for his inaugural address and the presence in this. शर्मा जी भी क्या छोड़ना है? शर्मा जी को तो रुक जाओ, शर्मा जी आप रुक जाओ, चलने में दिक्कत होती है उनको, काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, ही इज़ ऑलमोस्ट 80 ईयर्स बट स्टिल वेरी एक्टिव, सीढ़ी वीढ़ी भी आराम से चढ़ जाते हैं पूरा, सो दैट वे इज़ वेरी वेरी एक्टिव। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, आई थिंक आप सभी को पता होगा, कोयम्बटूर को आई थिंक इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट green city. I think they will be using total renewable energy for the city. So that plan has they have already made, and that is going ahead now. And 2070, I think we will be carbon neutral, and that will not happen just by saying. I think we all have to work together. We have to see that how this can happen. If you want to give a good future to our next generation, I think we should work for it. That is very, very important. But nowadays, you might have heard about this Russia and Ukraine tragedy, and UK again started using coal. If you see the worldwide, almost 30% energy is coming from still from the coal. India is still more, we are about 42%. But worldwide is almost 30% energy is coming from coal. So how to reduce that dependency? And it is predicted by 2050, 50% energy will come from the fuel. This from gas and petroleum. So we have to live with this, but how we have to see how we can capture the carbon, so we can make the energy which we produce is a green. Of course, it will not be clean, but it will be green energy. So that kind of things which we all have to ponder about and see that what we get it from this, from the experts, and what are the different government policies. If you see the government is running a lot of policies. I could not remember those names, so I noted down. I'll read you that. I think I was also not knowing so many policies are going. Schemes in the government of India. International Solar Alliance, we have, I think you might have heard, one sun, one world, and one grid. I think PM many times talk about this. This is another scheme which is going on. National Solar Mission is going on. We have Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uthan Mahabhiyan. That is also going on. Solar Park Scheme and Grid Connected Solar Rooftop Scheme. That is also by the government. National Wind Solar Hybrid Policy 2018. That is also there, which is under renewal right now. Hydrogen-based fuel cell vehicles and green energy corridors. So these are the schemes by Government of India. So you can understand that how our government is serious about this green energy, clean energy, and renewable energy. So let us work together, help our government, and see that how we can become the clean, green, and renewable energy country as fast as possible. With this, I would like to request Gopal Agarwal ji to come and give his perspective.
Oh, Praveen Kanji, please, please. I अनदर एकल विद्यालय के ट्रस्टी हैं और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट कोल के डायरेक्टर भी हैं अभी, मिस्टर प्रवीण कांजी. धन्यवाद महावर जी. मेरे मित्र प्रवीण कांजी और यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी इन इंडिया एक्सेलरेटिंग टुवर्ड ग्लोबल लीडरशिप कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस में जो 2 दिन के लिए आए हुए यहाँ पे सारे डेलीगेट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, आई अप्रिशिएट योर स्पेयरिंग दिस 2 days. मैं CSR रिसर्च फाउंडेशन का भी आभारी हूँ जो यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम कंटिन्यूसली वो अलग अलग विषयों पे करते रहते हैं. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द CSR रिसर्च फाउंडेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ दीनदयाल जी एंड महावर जी has transformed from a social alone organization to a leading think tank in India. They have been doing programs on blockchain technology, financial inclusion, education, health sector, energy sector, and they have been successfully implementing policies, giving inputs on the policy matter to the government. And I feel happy to participate in their program, and I thank them today for giving me this opportunity. Friends, today's topic is very important. If you have looked into 2-3 days papers or even the last 1 month, 2 month, etc., petrol, diesel, crude oil, gas, energy sector have caught the eyes of the world together, whether it is the Ukraine-Russia war or the rising price of petroleum, crude oil prices. It's a very complicated matter. And the continuously government is also trying to balance through its policy matters various aspects. Some days back, when the fuel prices had crossed to more than $115 a barrel in the international global crude oil markets, and the refineries, some of the refineries in the same sector, refineries were making huge profits over refining the oil products. The government had to levy windfall prices and even the export tax on the some of the companies which were getting those prices. And 2 days back, the government has to again reverse that decision. They have reduced the export tax on the petroleum prices. They have brought down the price, the windfall price windfall tax requirement on the refineries, etc. So, and at the same time, I am on the board of one of the petroleum company. There also we find that when we are distributing oil, we are distributing to the people, common people. Companies are facing various challenges. And these challenges range from subsidizing the petrol consumption by the people, how to procure oil, whether from Russia or Gulf countries or US, etc., how to give energy mix on gas, natural gas, and other things. So this is a very complicated sector. Whole petroleum sector, energy sector is a complicated sector, and it is a continuously challenging sector where policies at every level, at the global level, impact domestic pricing policy, domestic supply chain, domestic requirement, and it is one of the very essential element for the energy security and the economic and industrial development of the country. So this is the scenario where the government is working. The challenge becomes more in regard to India with the implementation of climate change issues. There are, at the global level, there are also issues about the climate change, the amount of carbon emission which takes place from the consumption of the fossil fuel, the rise in the temperature which it is causing. At the global level, these challenges are also
being looked into, targets are being set, and the target which have been set that by we will limit the rise of the temperature by 1.5 degrees, and that also is very difficult to be met. And the same challenges are with India also, because 80% of our import requirement on the petroleum prices, on the fossil fuel or energy price sector, is being imported, and it is increasing. The price is increasing, and it is a big change. So there are two challenges for India. One is the rising fuel prices at the global level. Availability is one issue, then transportation, all things are there, refineries another issue, but the rising price is an important issue. And meeting the climate change target, carbon emission targets, and the carbon footprint which our country has decided on. So these are two big challenges for India. It is a drain on our foreign exchange. So energy security is an issue. What is being looked into is that the currently our energy mix, as has been said, some points had been pointed out by the Mahavarji and Subhashji, that at present our solar power, the total consumption about 440 gigabyte of this energy that we are consuming. Out of that, we are consuming solar energy to be about 57 gigawatt, and bio is about 10 gigawatt. Hydropower, which India has abundance of hydropower, that is about 468 gigawatt. And then this wind power is about 47. So what the Prime Minister has said, that we have to increase the consumption and move towards renewable energy sector. He had committed several issues on the in the climate summit, in the where in the Paris climate summit, where he said that we will have to reduce because India is we will reduce our requirement of the carbon emission, etc. The target has been set that we will increase because of these challenges of climate change and the emission requirement and the energy requirement mix that we are spending on the for import of petroleum prices. We have to change our requirement from fossil fuel to renewable energy and increase the renewable energy consumption for the domestic industry by about 50%. That is important that the Prime Minister has said. And the reduction of the carbon intensity of economy has also to be brought down so that carbon emission in the country comes down. And in the renewable energy sector, what is important that there is one important energy where renewable energy sector which gives lot of potential to the India is about the green hydrogen energy. And hydrogen is an important source of energy. It is a renewable energy if it is produced through the use of solar energy. Electrolysis of water gives hydrogen, and that for use of segregation of hydrogen from the water, if you use solar energy, which is environmental friendly, which does not lead to emission into carbon. If you use electrolysis process for disintegration of water and getting hydrogen out of it, then it becomes green energy. There are three type of hydrogen energy which is very important, where our country at present is focusing. One is, at present also we are producing hydrogen energy, but it is through the process of using coal and fossil fuel. From that disintegration, through that is what is causing what is that from that process, if we get hydrogen, that is called the gray hydrogen or brown hydrogen. But if you get it through solar energy, then it becomes a green energy because the carbon emission out of that process is zero.
So what the government has been thinking and saying, and the Prime Minister had said on 15th August 2021, when he announced from the rampant of the parliament, from the Red Fort, that we are going to set up green hydrogen mission, and through that mission, we will support the green hydrogen energy production in the country, because we have ample solar power in the country. We have lot of water resources in the country. And India has the potential to become the global hub for green hydrogen. It can fulfill the domestic need of the country, as well as it will also can become one of the big exporter, globally a leader in the exporter in the green hydrogen. Therefore, green hydrogen mission was announced in 15th August 2021, and in this budget, the finance minister has given a roadmap for setting up this green hydrogen mission and what the government is going to do it. Government is focused on developing this green hydrogen, and that is where all the petroleum companies or the petroleum sector sees that the growth potential of the country in the energy sector is there. What is important in this green energy is that the requirement. Uh, Another important issue with regard to climate change that I would like to mention is, in the whether it is the SDG, Sustainable Development Goal of the United Nations, is there, or ESG compliance with regard to climate change requirement for the companies in the corporate sector, is those targets are being set where the companies, domestic companies which are manufacturing, whether it is in the steel industry, fertilizer industry, or whether in the other industries which consume lot of power, and hydrogen is one of the source of power. All these companies have to comply with ESG guidelines, SDG guidelines. And even in recently, when the Piyush Goyal went to the WTO for the WTO agreement, the globally scenario is bringing out certain challenges with regard to setting up trade restriction based on carbon emissions. So these SDG goals, requirement of SDG goals, requirement of environmental sustainable goals for the corporate sector, and with regard to coming of the trade restriction based on emission requirement, carbon footprint, etc. These challenges also have to be for the industries. If they want to grow in the future sector, they will also have to manage these things. And these are the important areas where professionals, where research, where industries can make huge potential. At the global level also, these standards, if they are set, they will become a challenge for every industry, not only petrol, diesel industry only, but steel, fertilizer, and other industries also, all metal industries, etc., where who are using energy for their production. If their carbon emission and carbon footprints are higher, if they are not using green energy, if they are not using energy which is renewable source of energy, then their carbon footprints will become a challenge for global trade. Globally, these trade restrictions will also come. So the importance of green energy is extremely very important for all of us, for all industries, not only petroleum industry, for the nation to become Atmanirbhar, also for our saving of the foreign exchange also it is required. Therefore, these initiatives are being taken place. Lot of industries are preparing, even in our companies also. There, we are setting up a committees so that in the slowly we reduce our dependence on the fossil fuel, coal, and other petroleum fuels, etc. Even this CNG and natural gas, they are also not fully safe from the carbon emission, though they are being used as a transition
moving towards the renewable energy, but still their emission with regard to carbon is not that good as green energy or hydrogen energy is taken care of. Therefore, these issues are very important for industries to prepare themselves, especially petroleum industries and other industries. That is very much required, and therefore government has come out with certain important initiatives which are uh, which I would just like to underline that they are very important in the future, where the government is looking into supporting this green energy. One thing is around last week only, the government has announced that renewable purchase obligation has been set, that in the future our procurement for green energy will have to be increased to almost 24.61%. One thing, all discoms which are which are the distributor of the power and energy, they have to purchase almost by 2023 24.61% of their requirement through renewable energy. So this is where the demand will come for the renewable energy, where the government is looking onto supporting the system. And even in the future, government has also announced the waiver of interstate transmission charges for 25 years. The upgradation of the important challenge in the green energy and hydrogen energy is storage and transportation and the cost. At present, the technological cost, which is very high for separate electrolysis process for the green energy, we have to work and develop and do research on the find out the ways so that this cost of production of green energy comes down. Private sector is committing huge amount. Reliance, NTPC, L&T, BPCL, Indian Oil Corporation, ONGC, all have set up research center and looking, scouting for technology so that globally, so that they can get those technology which can reduce the cost of electrolysis process. At present, it is quite high. Unless this cost comes down for separation of the green energy, it will not become very viable. So the technology is required, and the transportation and the storage is a big challenge for green energy, hydrogen energy. There also, government has announced waiver of interstate transmission charges for those who are producing green energy. Even the government has said that it will give priority to those companies. It has given permission to those companies who are ready to produce green energy so that they can offload the excess energy to the grid. It is giving priority access to the grid, which can be again taken back when the requirement is there. So that priority of grid allocation connectivity is also there. And even government has set up a single portal permission so that statutory permission are given at a fast pace. And even government has also announced that for the storage at the port level, for they will provide bunkers and space or land allocation. On that also priority is being looked into. So this is the scenario. Through green energy mission, the government will provide lot of government has announced lot of support and for the provision of this development, research, etc. So that green energy is promoted in the country. Private sector is also coming up for a lot of development in the sector. PSUs have also set up committees. What I overall want to say in this scenario is, this is the future of energy. This is the only way where energy security can be reached by our country. There is huge potential for this because we have water and solar energy which available. And after the electrolysis also, this water becomes reusable. There is low carbon emission for our trade industry, etc. All these global standards
which can come as a trade barrier also, they will become a challenge if we are not prepared onto this energy. So this is a very important issue, and some of the research reports says not only domestic procurement and targets that has been set by the government for renewable energy, reduction of our dependence on the fossil fuel, etc., over a period, and moving towards zero carbon emission by net zero carbon emission by 2050. All these together give ample opportunity to this sector. We all should work on this area. Even professionals, etc., get ample opportunity. And one of the report I was seeing that at present, the global hydrogen produced in the green energy is only 1% of the total energy requirement, which is targeted by 2050 to increase to about 12%. So globally also there is a big opportunity for this sector, and India can become one of the important source of energy globally, and work for our domestic countries benefit also. So these 2 days will be a very important initiative by the CSR Research Foundation, where the different leaders of the industries will brainstorm about the whole issue. But ultimately, in the inaugural session, I would like to just say that we all know the importance of this area sector for our country. We all know the government and the prime minister of the country is committed to develop this sector, and there is immense potential, so we can have immense opportunities in all areas, whether we get the technology, set up the transportation, grid development, storage. There are ample opportunities for all of us at the global and domestic level in this area. And as Prime Minister has said that we would not only have this energy for the domestic need, but we will definitely become one of the major exporter of this area. So this is an important thing. And when the Prime Minister, whose statement was very categorically very much appreciated, was that one world, one sun, one grid. Ultimately, this is very important, that if the carbon emission, climate change, etc., are not taken care of, then globally it impacts everybody. So we have one sun, one grid, and one world. So that's an important tagline on which the government is working. And with this, I would like to thank CSR Research Foundation for giving me an opportunity to discuss some of the issues that I thought were important from this point of view. And I thank all of you for patiently listening to me. Thank you very much. मैंने बोला था ना, खजाना है ज्ञान का. He has come out with many things, I think, government perspectives and how we can move ahead with this. And we have Praveen Kanji with us. He is a director of Eastern Coalfield. तो हम बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कि कोल को हटा देंगे तो मुझे फिर हमारा क्या होगा, हम कहाँ से डायरेक्टर बने रहेंगे. तो आई थिंक, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम, बोले सब कोल चिंता मत करिए, अगले 30-40 साल तो कुछ होने वाला नहीं है, वो रहने ही वाला है. वैसे ही ना, जैसे हम ऑयल एंड गैस को सोचते थे कि 20-30-40 सालों में ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा. मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस तो कम से कम अगले 100 साल तक चलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है. अगर ऑयल इंडस्ट्री के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए, अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल उसको दिमाग से निकाल दीजिए. So this industry is going to, only thing we have to see that how we can use the green and clean energy. We are talking about clean energy. When we talk about clean energy, 4 things comes to our mind. One is air, sun, water, and the geothermal. These are the purely clean energies. But still people say, no, they are not clean energy. Why? Because when you are making solar panels, PVs are used, and it is estimated by 2050, 10% of the world's waste will be these solar panels.
So what you are going to do? Is it not going to generate waste and going to generate CO2? Yes, it will. Now people talk about hydropower. When we make a dam and establish a hydropower, how many trees you are cutting? So many ecological balance you are disturbing. So it is not is it a clean energy? So how to compensate all this? Even the mid wells, one says it is one of the safest. But if you seen the wings, mega this, what you are going to do with that? But people are recycling those things. Now we have to think on that, how we can develop the PVs who are environment friendly, the wings which can be used for the different use. So these are the things we have to be discussing, and that is the reason we have this conference. So these things should come into your mind, that how we can make the energy which you are really developing or which you are producing is clean and green. So that is the objective of this conference. And with this, some thought-provoking things, because normally I talk differently. थोड़ा सा मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ जो माइंड्स को इग्नाइट करती रहती है, तो मेरा दिमाग कुछ ऐसे ही चलता है ज़्यादा, लोगों से सुन के ऐसे ही हो गया हूँ मैं. So now we have Praveen Kanji. He's director, and two more things he is handling. One is he is a Vidya Bharati president, and विद्या भारती के अंडर कम से कम 15,000 स्कूल है जो चलते हैं, उनका पूरा संचालन आप देखते हैं, और उसमें गरीब बच्चे हैं, और मतलब काफ़ी एक तरह अफोर्डेबल शिक्षा आप दे रहे हैं विद्या भारती के थ्रू. एंड संस्कृत भारती ट्रस्ट के भी आप प्रेसिडेंट हैं. आपने देखा होगा संस्कृत में काफ़ी चल रहा है कि आप संस्कृत में बोलना चाहिए, संस्कृत का यूज़ थोड़ा बहुत तो करिए, ये अपनी लैंग्वेज है, एंशिएंट टाइम से चली आ रही, तो उसको भी प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में. एंड एकल विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, जो हमारा PSUs का एक कमेटी है, ही इज़ वन ऑफ द वेरी एक्टिव मेंबर, और काफ़ी स्कूल उन्होंने एकल विद्यालय को दिए हैं, जिसका संचालन ईस्टर्न कोलफील्ड करता है. सो विद दिस, हाँ वो बता दिया मैंने साहब. प्रवीण कांत जी के सब आप किसी से पूछो बता देंगे प्रवीण कांत जी कौन है. क्यों भैया जय, बता देंगे ना. So with this I call, he is a chartered accountant basically. अगर आप प्रोफेशन में देखेंगे, वेरी रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट. काफ़ी इनके साथ लोग बैठे रहते हैं, मैं जब भी कभी गया हूँ तो काफ़ी ज्ञान उनको भी बांटते रहते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल सर्विस, ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो. सो आई कॉल अपॉन श्री प्रवीण कांत जी टू गिव हिज व्यूज. हमारे बीच में सुदीप जैन जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ. आइए भाई प्रवीण कांत जी. धन्यवाद महावर जी, दीनदयाल जी, मेरे मित्र गोपाल अग्रवाल जी. मैं वैसे मुझे बोलने के लिए तो नहीं बुलाया गया था आज, मुझे एज ए गेस्ट ही बुलाया गया था, पर मेरे से आग्रह किया गया तो मैं उस आग्रह को ठुकरा नहीं सका. मैं वैसे तो ईस्टर्न कोलफील्ड में डायरेक्टर भी रहा हूँ, अभी टेन्योर ख़त्म हुआ है मेरा 3 साल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो मुझे ध्यान आया कि जब पहली बोर्ड मीटिंग थी हमारी, तो उसमें यही डिस्कस हो रहा था कि 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स वो लेकर आ रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स. एंड आई वाज सरप्राइज कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे थे कि हम जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं तो शायद जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम हो जाएगी कोल की. और मैं उसी मीटिंग में मैंने डिस्कस करने लगा, मैंने कहा जी हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और इतना बड़ा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, तो लगता तो नहीं है कि अब आने वाले 5-7 साल में शायद कोल की इतनी आवश्यकता होगी. तो हमारे CMD थे PS मिश्रा जी, वो मेरे को कहने लगे, बोले प्रवीण कांत जी, कोल की अभी रिक्वायरमेंट कम से कम हिंदुस्तान में तो आगे आने वाले 20 साल में भी ख़त्म होने वाली नहीं है, जो सीनेरियो है. और वही आज लग रहा है मुझे, क्योंकि आज मैं पीछे पढ़ रहा था, कोल इंडिया को गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा इंपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी टेंडर्स इशू करे हैं कोल इंडिया ने. और जो पूरे वर्ल्ड वाइड ही, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसके कारण वर्ल्ड वाइड सीनेरियो काफ़ी चेंज हुआ. और जिस कंट्री ने, पर्टिकुलरली चाइना ने जैसे इंपोर्ट नहीं करा या थोड़ा सा उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन रखी कोल के ऊपर, तो काफ़ी उनकी इंडस्ट्री में समस्याएं भी पैदा हुई. और वो समस्याएं इतनी गंभीर हो गई कि वहाँ पर जो है
काफ़ी बड़ा एक, मुझे वैसे पूरा तो मैं जानकारी नहीं, क्योंकि वहाँ से न्यूज़ बहुत कम निकल के आती है, पर जिस हिसाब से वहाँ पर अर्थव्यवस्था की हालत चल रही है और जिस हिसाब से बैंकों की हालत है, काफ़ी गंभीर समस्या उन लोगों के लिए खड़ी होने वाली भी है। तो मैं समझता हूँ कम से कम हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी है जो पूरे विश्व में किसी भी कंट्री का जो पैरामीटर है, अगर एनर्जी प्रोड्यूस उसके अंदर नहीं हो रही, पर कैपिटा एनर्जी कम है, तो वो मान के चलिए कि वो कंट्री जो है पुअर भी है और अंडर डेवलप्ड भी है। तो हमारे यहाँ क्योंकि एनर्जी की कंजम्पशन मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड सबसे कम ही होगी अभी भी, और मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जिस प्रकार से सोलर एनर्जी को हम या ग्रीन एनर्जी को हम प्रभुत्व दे रहे हैं, अभी बहुत कुछ उसके लिए प्रयास करने बाकी हैं। और अल्टीमेटली क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसा गोपाल जी ने भी बताया, बाकी स्पीकर्स ने भी जरूर बताया होगा, 80% आज भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बाहर के देशों से पूरी होती है। और एक हमारा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ता बढ़ता बहुत, जो पहले 7-8 बिलियन डॉलर ही होता था, बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा हो चुका है, 20 बिलियन डॉलर के भी पार हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको हमने तुरंत काबू नहीं किया, तो एक गंभीर समस्या फॉरेन एक्सचेंज की भी पैदा हो सकती है। अगर हमने किसी भी प्रकार से ग्रीन एनर्जी को आगे और प्रमोट नहीं किया, आगे हम इसको नहीं बढ़ा सके, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे हम कोल भी बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक हिंदुस्तान के, भारत के हिसाब से एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी लगभग जहाँ जहाँ भी हमारे प्लांट्स लगे हैं, 80-90% कैपेसिटी पे चली जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नहीं दिक्कतें रहती हैं। पर हमारे, क्योंकि जैसा भी अभी विद्या भारती में भी हमारे स्कूलों में हमने काफ़ी रूफटॉप लगाए सोलर प्लांट्स, तो वो सारे के सारे अच्छी एनर्जी पे काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग ऑल वेरी वेरी वेल। तो ये सब हमारा अभी बहुत लंबा सफ़र हमें तय करना बाकी है। ग्रीन एनर्जी की तरफ मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम रखा दीनदयाल जी ने, ये एक बहुत आवश्यकता है इस समय की, और इसके ऊपर बहुत कुछ रिसर्च होना अभी भी बाकी है। जैसे इवन हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन सेल की बात करते हैं हम, इसमें भी हमारे को बहुत बड़ी अभी टेक्नोलॉजी की और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, जो शायद बाकी कंट्रीज को अभी, हमारे प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस तो कर दिया कि हम जीरो एमिशन कर देंगे 2060 तक, पर वो टारगेट जो है वो तभी पूरा हो पाएगा जब वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज जो है पूरा इसके अंदर साथ देंगी। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है एक सबसे बड़ी मेजर समस्या जो हमारी आ रही है, उसको हमें और आगे इसको काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हमारा क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा चाहिए और इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो जो हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की, वो जब तक ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी नहीं होती, तब तक जो है वो ग्रीन एनर्जी की जो है बात बेमानी रह जाएगी शायद। और इसके लिए जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी बताया, गवर्नमेंट पूरी तरफ से अपना पूरा प्रयास भी कर रही है, पर मैं समझता हूँ कि अभी बहुत लंबा सफ़र हमें तय करना है। और ग्रीन एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं, कम से कम आने वाले 20-25 साल तो अभी कोल की जो है आवश्यकता हमारे को लग रहा है कि रहेगी। और हमारा जो इम्पोर्ट है कोल का, वो भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी हम काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं जहाँ भी थोड़ा प्रोडक्शन में कमी आती है, तो तुरंत शोर मचना शुरू हो जाता है कि 5 दिन का कोल रह गया या 3 दिन का कोल रह गया, इसमें पावर कट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ी ऐसी हमारे को न्यूज़पेपर में जब मिलती है, तो हमें लगता है कि ये तो हम कहाँ रहने लगे, लग रहा है कि कल पता नहीं लाइट भी होगी नहीं होगी हमारे घरों में। तो ये अभी जो मैं बात कर रहा था ग्रीन एनर्जी की, तो इसमें अभी बहुत बड़ा काम करने के लिए बाकी है। और हमें शायद, मैं समझता हूँ कि हम जो छोटे लेवल पर भी हम अपने घरों में कम से कम आवश्यकता ज़रूर महसूस करें कि जहाँ-जहाँ हम लगा सकते हैं अपने छतों के ऊपर, या गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है इसमें, जो हम इसकी सोलर पैनल की बात करते हैं, तो वो हमें अवश्य उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जिनके यहाँ लगता है जगह है, वो ज़रूर उसको यूज़ करें और उसके अंदर पूरी कोशिश करें। यही हमारी छोटी-छोटी कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमने बड़ा काफ़ी काम किया है। हमारे जितने भी स्कूल चलते हैं, जैसे 15,000 से ज़्यादा स्कूल चलते हैं। दिल्ली के अंदर भी हमारे काफ़ी, आपने सुना होगा नाम सरस्वती बाल मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, उन सब का मैं ये प्रेसिडेंट काम देखता हूँ, तो दिल्ली वाले स्कूलों का। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर दिल्ली में भी हमने काफ़ी स्कूलों में पीएसयूज़ से भी हमारे को उसमें प्रमोशन काफ़ी मिला है, सब्सिडी वगैरह मिली है, और उसके अंदर सीएसआर में भी हमें फंड्स मिले हैं। तो वो सब चीज़ें मिलकर कहीं न कहीं देश की ग्रीन एनर्जी को एक तरीके से बढ़ावा दे रही हैं। और ये जो ग्रीन एनर्जी है, हमारी जब तक इस लेवल पे नहीं आएगी कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएँ, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास ग्रीन एनर्जी की तरफ जारी रहना चाहिए। और इसके अंदर 2 लाभ होंगे, एक तो ग्रीन एनर्जी तो मिलेगी,
साथ साथ में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। वो डेफिसिट जो है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके अंदर भी कमी अवश्य होगी। और हम जो देखते हैं जगह जगह बाढ़ आ रही है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी सब उसी के दुष्परिणाम हैं। तो इनकी तरफ भी हमारे को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी अगर हम ग्रीन एनर्जी को आगे प्रमोट कर पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण काट जी ने जोश भर दिया, करंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको समझ में आ गया कि बहुत जरूरी क्यों है ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। प्रवीण काट जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत जोश भरा भाषण दिया। So we have Professor Sudeep Jain ji with us, Sudeep Kumar Jain. He is a president awardee and he is senior professor of Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyalaya, New Delhi. So he is amongst us. We invited him as a special guest. So he want to have put his views on this because in this occasion. So I have to request Sudeep Jain ji to please give the wish. सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित मेरे सभी आत्मीय जिज्ञासु और विद्वज्जनों, मैं जब इस विषय के लिए भाई अग्रवाल जी ने मुझे कहा तो मुझे इस बात का एक बड़ा भारी हर्ष हुआ कि इसमें जो पहला शब्द है ग्रीन एनर्जी, जिसे हम हरित ऊर्जा भी कहते हैं, इसमें कभी आपने सोचा कि कोई ऊर्जा हरी होती भी है क्या? यह एक आध्यात्मिक विजन है। हरित मीन्स जो दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाए, जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब ना करे, जो प्रकृति को खराब ना करे, जो पर्यावरण को खराब ना करे और आपको ऊर्जस्वित रखे, आपके संसाधनों को ऊर्जस्वित रखे। इसके लिए हमें क्या यह जरूरी नहीं है कि यदि हमारा पहला शब्द ही एक आध्यात्मिक अभिप्राय का है तो उसको ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को, इसके पूरे चिंतन को हमें अपने भारतीय संस्कृति, संस्कृत वांग्मय और उसके साथ आज के जो वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है उसको हम जोड़ के देखें। यदि हम जितने संसाधनों के गुलाम बनेंगे, तय मानिए अपनी सीमा से ज्यादा बढ़ के करेंगे, वहां हम पराधीन होते जाएंगे। वहां पर हमें गलत सोच के तत्व लेना पड़ेंगे, गलत एनर्जी लेना पड़ेगी। जो आदरणीय पूर्व वक्ता ने बताया, अभी संस्कृत भारती के अध्यक्ष हैं और मैं भी उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो जितने हम सोलर पैनल्स ले रहे हैं और हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वह कार्य होना ही चाहिए, लेकिन इसके पहले इस सबको सोचने वालों को अपनी मानसिक ऊर्जा को भी बदलना पड़ेगा। हम संसाधनिक ऊर्जा की चिंता कर रहे हैं, वह बहुत जरूरी है। मैंने बचपन में देखा, किसी गांव में ऑटो में बैठा, इतनी तेज बदबू आई, हमने की क्या हुआ, खांसी आने लगी। भाई साहब, पेट्रोल की जगह हम लोग मिट्टी के तेल से चला रहे हैं, गलत ऊर्जा के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को भी परेशानी और प्रकृति पर्यावरण को परेशानी। बंधुओं, एक यदि गलत साधन का प्रयोग हुआ तो उसका दुष्परिणाम हमने शारीरिक और प्रकृति से देखा, लेकिन एक गलत विचार का प्रयोग होगा तो उसका नतीजा कहां जाएगा? हमारे देश में शुरू से इस ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति ने, हमारे प्राचीन विद्वानों ने और ऋषियों मुनियों ने सदा से काम किया। उन्होंने एक छोटे से छोटे जीव जंतु, प्रकृति के एक एक अंग, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, मनुस्मृति में मैंने पढ़ा, दृष्टिपूतम गच्छेत मार्गम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। यदि आपको आंख से देख करके रास्ते पर चले और कपड़े से छानकर पानी पिए, ये मनुस्मृति की बात बता रहा हूं मैं, ये किसी पर्टिकुलर धर्म की नहीं, इस देश की संस्कृति की बात बता रहा हूं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जब तक हमारे इसी तरह विचार नहीं छनेंगे तब तक हम पर्यावरण के हितैषी नहीं बन सकते हैं, और जब तक हम विचार से पर्यावरण के हितैषी नहीं बनेंगे तब तक तय मानिए
कि ग्रीन एनर्जी की चिंता और चिंतन दबाव में किया जा सकता है, यह स्वतः स्फूर्त होकर नहीं किया जा सकता। जब तक एक एक व्यक्ति हम लेते हैं, यूज करते हैं चीज, यूं फेंक देते हैं, पर्यावरण को हम बिगाड़ रहे हैं। यदि हमारे अंदर जब तक इतनी चेतना नहीं जगेगी कि हम किसी के दबाव के बिना प्रकृति और पर्यावरण को नहीं बिगाड़े, छोटी सी छोटी एनर्जी का काम जो हम करते हैं ऊर्जा का, वह भी हमारा सात्विक हो, शुद्ध हो और दूसरे के लिए अहितकारी हो। यदि हम हितकारी पैदा नहीं कर सकते हैं तो यह रोल जरूर निभाएं कि हम दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाएं। मेरे ख्याल से ग्रीन एनर्जी का यह आध्यात्मिक पक्ष है। और बाह्य पक्ष पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं उसका बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, कुछ पॉइंट मैंने छांटे हैं, किसी सेशन में बाद में बताऊंगा। वह यह है कि पहले हमने सुना, यह कल्पना नहीं है, इसके तथ्य मिल चुके हैं। श्री राम जी जब लंका से अयोध्या तक आए थे, जिस विमान में आए थे उस विमान में कोई प्रदूषण नहीं होता था, और वह विमान अभी भी कहीं मिला है, उसके बारे में सूचना मिली है, वैज्ञानिकों ने उसकी पुष्टि की है। मैं पूछना चाहता हूं, यह काम यदि हजारों साल पहले से हो रहा था तो उस एनर्जी के सोर्स जिस संस्कृत और प्राकृत के वांग्मय में है, वहां से क्यों नहीं खोजे जा रहे हैं? हम मात्र दूसरों से ही क्यों ले रहे हैं उन सोर्सों को? उनको भी सोचा जाए, उन पर भी काम किया जाए। मेरे पास अभी एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं। जिस समय हिटलर ने एटॉमिक एनर्जी की खोज की, आप विश्वास करेंगे, उसने भारत से 1000 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स मंगाए थे जो संस्कृत और प्राकृत आदि भारतीय भाषाओं के थे। और उसमें एक ग्रंथ था जिसका नाम था गंधस्थी महाभाष्य। उसमें एटॉमिक एनर्जी पर सारा काम बताया गया था। और वह ग्रंथ आज भी वियना के जो सेंट्रल रेलवे है उसके करीब 700 मीटर नीचे एक लाइब्रेरी गुप्त बनाई गई है, और उसमें सुरक्षित है, लेकिन देते किसी को नहीं है, देखने किसी को नहीं देते, उसकी दूसरी कॉपी कहीं नहीं है। और हिटलर ने जो रिसर्च की थी एटॉमिक एनर्जी की, उसके आधार पर की थी। इसका मतलब एनर्जी के बहुत सारे सोर्स जो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ प्रशस्त पाद भाष्य जैसे ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन के, उनमें जो एटॉमिक एनर्जी के सूत्र दिए हैं, हमने बहुत सी चीजें छोड़ी हैं। संस्कृत को या प्राचीन भारतीय भाषाओं को, हमारे दर्शनों को हम पिछड़ा कहते हैं, जबकि वह आपके एडवांस से भी एडवांस हैं। हमने उन पर काम नहीं किया। इन चीजों पर देखा जाए। इस सत्र में मैंने विशेष रूप से अनुरोध किया था माननीय अग्रवाल जी से कि हम लोगों को भी आने का मौका दिया जाए। हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, हम साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन जिन पक्षों पर आप चर्चा तक नहीं करते हैं, उन पक्षों पर चर्चा हो, चिंतन हो, शोध हो। और उसके लिए यदि किसी को कहीं परेशानी होती है, किसी भी प्राचीन लिपि की, प्राचीन भाषा की, उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं। इसी दिल्ली में रहता हूं और आज तक 50 बुक्स मैं भी लिख चुका हूं डिफरेंट टॉपिक्स पर। अगली बुक जो मेरी आएगी वह ग्रीन एनर्जीज का प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो स्रोत है उस पर केंद्रित होगी। यह मैं आपको वचन देता हूं। धन्यवाद। सुदीप जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो आपकी किताब आएगी उसको पब्लिश हम करेंगे अगर आप चाहें तो। दो थैंक यू सर। ऐसा है कि वैसे तो आप सब लोग बड़े इंटेलिजेंट पर्सन हैं। हमने कोशिश करी है कि एनजीओ को भी जोड़ा है। प्रियंका जी ने जैसे बताया कि इनके 15,000 स्कूल हैं, दे आर ट्राइंग कि भी सब स्कूल सोलर पर आ जाएं। ऐसे हमने यूनिवर्सिटी से भी जोड़ा हुआ है। तो आप इसको अदरवाइज नहीं लें, क्योंकि हर प्रोग्राम में सब तरह के लोग आते हैं तो ज़्यादा इनपुट मिलता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि कुछ अगर आपको लग रहा हो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल साथ साथ ये भी टेक्निकल है कि हमारी प्राचीन जो हमारा प्राचीन शास्त्र है उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के बारे में होगा। तो मैं महावर जी से चाहूँगा कि आप। हाँ, ग्रीन एनर्जी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुदीप जैन जी ने दिया। एक्चुअली वो उस तरह से हमने भी नहीं सोचा था ग्रीन एनर्जी का ये एक वो भी पहलू भी हो सकता है। थैंक यू सुदीप जी, आई थिंक बहुत अच्छा आपने किया। इसमें मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं बहुत काफ़ी तो आउटसाइड कंट्रीज आफ्टर रिटायरमेंट मैं करीब 20-22 कंट्रीज में विजिट किया हूँ। तो मैं एक चीज़ बहुत ज़ोरों से नोटिस की, वो ये थी कि इंडियन ब्रेन सबसे लॉजिकल ब्रेन है।
आप जहाँ भी देखो, मैं सैन फ्रांसिस्को गया था एक कॉन्फ्रेंस में, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स जितने हम, करीब 15 कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स वहाँ पे थे, 15 में से 14 इंडिया के थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंडियंस। योर ब्रेन इज वेरी लॉजिकल ब्रेन। हम चीज़ों को रिप्लेस करने में विश्वास नहीं करते, हम चीज़ों को रिपेयर करके यूज़ करने में विश्वास करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं इस चीज़ को। तो आपने देखा होगा एक जुगाड़ जो हम करते हैं, आपने देखा जुगाड़, यहाँ पे गाड़ी भी चलती है, जुगाड़ और चीज़ों में, मैकेनिकल चीज़ों में यूज़ होता है, बट उसपे एक किताब भी है जुगाड़ पे। कुछ हमारे दोस्तों ने पढ़ी भी होगी, करीब 300 पेज की किताब है। तो जो हम करते हैं उस चीज़ों पे लोगों ने किताब भी लिख दी, और अभी जैन साहब भी किताब लिखेंगे हरित ऊर्जा पर, तो डेफिनेटली सर वी वुड लाइक टू पब्लिश दैट। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। एंड बिफोर वी ब्रेक फॉर बायो ब्रेक, I'd like to felicitate Sri Gopal Agarwal ji. I would like to call Sanjay Jain ji, please come to the dais. Momento. So अभी next felicitation actually, हाँ, प्रवीण कांत जी. I would like to call Executive Director from ONGC, Mr. Mishra, to felicitate. To facilitate Mr. Sudeep Jain ji, I would like to call Ajay from ISPRL. He's a Deputy CEO there. जो देश की में जहाँ तेल का भंडारण किया हुआ है कैमल्स के अंदर, ये उसको पूरा देख रहे हैं अभी। एट प्रेजेंट ही इज होल्डिंग चार्ज ऑफ सीईओ देयर। तो एनर्जी की रक्षा पूरी कर रहे हैं, ये बचा के रखा हुआ है इन्होंने एनर्जी को। थैंक यू। With this, we'll have a break of 10 minutes, bio break, and then we will again assemble it to start with the. And I think soup is there in the back. It's served. You can have soup and then you can start the next session after that. हाँ हाँ